okay? Yes. All right. So let's come on to which was the last case number that we had done? So case number 5. Case number 5. So we are coming on to case number 6 now, and that is connected to rule number 18. So we are on rule number 18 now. So can somebody read rule number 18 alpha? Sir, a power-driven vessel underway shall keep out of the नहीं way of. नहीं नहीं नहीं, उससे पहले कुछ और भी है. Sir, except where rule 9, 10 and 13 otherwise require. Very, very important line. What is the meaning of this line? Except where rule number 9, 10 and 13 otherwise require. इसका क्या मतलब है? Anybody in the class? सर रूल नंबर 9, 10, 13 को छोड़ के अदरवाइज जो ऑल रूल है उनमें रिक्वायर होगा सर. So that means basically what we are trying to say is rule number 9, 10 and 13 will override over rule number 18. This is the meaning of it. Agreed? So यानी कि TSS पे और नैरो चैनल्स पे और नैरो चैनल्स और ओवरटेकिंग पे ये जो रूल होगा ये अप्लाई नहीं होगा. Absolutely right. ओके सर. इसका मतलब ये. So rule number 9, narrow, TSS, overtaking will override over rule number 18. ये कहने का मतलब है. Will override it. So now you start with alpha. Now you start with alpha. Read alpha, please. So a power-driven vessel underway shall keep out of the way of a vessel not under command, NUC, a vessel restricted in her ability to maneuver. So So the second one, a vessel restricted in. wait. Hold it. So a power-driven vessel underway shall keep out of the way. मतलब क्या है? Duty to keep clear. A power-driven vessel has a duty to keep clear. DTKC. Duty to keep clear. Of which all ships? 4 ships. 1, that is NUC. Second, that is RAM. Third, that is fishing. And fourth, which is sailing. These powered vessel will keep clear of these ships in open sea at all times. In open sea at all times. At all times. ओपन सी होना चाहिए लेकिन जब नैरो टीएसएस ओवरटेकिंग हो जाएगा तब ये नहीं हो सकता. So that means अगर this is a powered vessel doing 6 knots and I have a NUC doing 8 knots.
vessel A, vessel B. Which vessel will take action? Vessel A, sir. Vessel A will take action. Sir, B. So, Vessel B. As per which rule? B, sir. B, sir. As per which rule? Overtaking. Rule number 13. Rule 18. So, 13, sir. so both 13 and 18 will apply. So Bravo will take action. As per rule number 13. Rule number 13 की first line पढ़ो. Notwithstanding anything contained in the rules of Part B, Section 1 and 2, any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being Okay, overtaken. just hold it. Hold it. Any vessel overtaking any other, that means the faster vessel, will always keep out of the way. So if you have a mobike which is overtaking a cycle, the mobike will keep clear. But if you have a cycle which is overtaking a mobike, the cycle will keep clear. That's the point. So therefore, rule number 13 says so. And the first line of rule 18 also is saying the same thing. Except 9, 10 and 13 otherwise require. Have you understood this bit? B will take action. So if you are an A, what will you do? I will keep clear. Keep course and speed. You will maintain your course and speed. You will not keep clear. You will maintain your course and speed. A does not take any action. Bravo does not take any action. What will you do? 5 short and rapid blasts to attract her attention. She is supposed to take action. She still does not do so. Now what will you do? Alter course to port. Two short blasts, of course. That is understood. Alter course to port. And keep well clear. Is this okay with everyone? Sir, why not to starboard? Is this okay with everyone? Hanji? Sir, why not to starboard? Why not to starboard? देख लो भैया, बता दो मुझे. Starboard जाओगे? Risk of collision बढ़ जाता है उसमें. अगर starboard जाओगे तो बढ़ जाएगा. आप उसको मारना चाहते हो क्या? बट सर ओवरटेकिंग तो वो किसी भी साइड से कर सकता है ना, पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड दोनों साइड से कर सकता है. तो आप starboard जाओगे क्या? सोचो आप. अगर आप starboard जा रहे हो तो क्या होगा? We are increasing the risk of collision. बस वही तो बात आ गई ना सर. So you will take whatever action to reduce or minimize the risk of collision, not to increase it. You can't do that. No? Can A reduce speed? हाँ सर. Can A reduce speed? The answer is no. You cannot. Yes, sir, Because the TCA will decrease.
the CPA will decrease. That's why. And now this vessel can be any of these 4 vessels. So this can be a ram also. It can be a fishing also. It can be a sailing also. कुछ भी हो सकता है ये. If he is overtaking my vessel, it is her duty to keep clear, as per rule number 13 and rule number 18. Both. Is this case okay with everyone? Yes, sir. Case number 6. This is case number 6. Is this okay with everyone? Yes, sir. Any doubt anybody has? Yes, sir. All right. I'm coming on to case number 7 now. Coming on to case number 7. All right, I have a situation like this. This is a vessel Bravo. She's a towing vessel. And she's showing the white towing vessel lights. The white towing vessel lights. And she's showing the red, white, red lights. That is the ram lights also. Okay, you're on vessel Alpha. Whose duty to keep clear? Whose duty to keep clear? Sir, as per Bravo, rate. sir. हाँ जी. Sorry, Alpha, sir. ब्रावो क्यों कह रहे हो भाई? Alpha, sir. Sir, Alpha. Sir, now we are in open ocean. Open waters. Alpha, sir. Sir, Alpha, sir. Alpha's duty. It's the alpha. Okay. What action would you take? Can you alter to starboard? Can you alter to starboard? Port, sir, port. Yes, sir. My question is, can you alter to starboard? No, sir. No, sir. Port, port, sir. Can you alter to starboard is my question. No, sir. Okay. As per which rule I can't alter to starboard? Andy. As per which rule I can't alter to starboard? It goes down and this goes. As per which rule I can't alter to starboard? भाई काफी लोगों ने नो बोला है तो अब रीजन तो दो. अब रीजन बताओ. भाई रीजन दो भाई. क्या रीजन है? Can I alter to port? हाँ जी. क्या हो गया पूरी क्लास से? No, sir. Sir, in this case, we will alter to starboard, though we will increase the CPA, the TCPA,
but we cannot alter to port as per rule number 17 Charlie. As per rule number 17 Charlie, I cannot alter course to port. Do you agree with, does the class agree with this? Sir, we can alter to either side. Because can't. it's rule number 18, we can't? Okay, sir. नहीं अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. We are thread-bearing the rule. So I'm not committing anything. I want to listen to the class first. So some of you said we can't alter to starboard. I want to know the reason. Then some of you are saying we can't alter to port. I want to know the reason. Sir, we can alter to either side because rule number 18 says that a power-driven vessel underway shall keep out of the way of. It doesn't mention where to. So I think we can alter to either side, except where rule number 9, 10, 13 are there. Then what is the reasoning for 17 Charlie? Just now, some of you were saying regarding 17 Charlie, I cannot alter to port. Is that applicable? I am a giveaway vessel over here. Therefore, according to rule number 16, every vessel which is directed to keep out of the way of another vessel shall so far as possible take early and substantial action to keep well clear. So is rule number 17 applicable here? No, sir. Why not? No, sir, because that is another power driven vessel. That is for two power driven vessels precisely. Yes, sir. मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था 15, 16 and 17 is applicable for two PD vessels. Don't you remember the first day we did this? भूल गए? जब हमने शुरुआत करी थी तो मैंने जान के 15, 16, 17 को एक ग्रुप बनाया था. यस और नो? यस सर. तो उसका मैंने कुछ लिखा था बोर्ड पे, हमने कुछ लिखा था उसका 2 PD वेसल्स, तब वो एप्लीकेबल है. इसमें तो वो 17 बोल ही नहीं सकते तुम. जैसे ही तुमने 17 बोला मैं बोलूंगा भैया कमरे से बाहर जाओ, 2 महीने के बाद आना. वो है 2 months. काला पानी की सजा, वो है हिसाब. सीधा काला पानी, अंडमान निकोबार. जिसने बोला वो अंडमान निकोबार. ये है कहानी. तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल विद व्हाट यू स्पीक. एंड सोचो, क्योंकि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसमें कोई डेप्थ है, और वो ऐसी डेप्थ है कि उसमें मतलब हजारों की संख्या में लोग डूब चुके हैं और काला पानी जा चुके हैं, और फिर 2 महीने के बाद आके फिर तब याद आ जाता है, हाँ सर आपने क्लास में बताया था. तो इसलिए बड़ा केयरफुल. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 18 अल्फा, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे सर. उसके अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 18 अल्फा के सर हमको कीप क्लियर रखना है उसको, तो वी विल गो टू स्टार्बोर्ड and you can go to any side. Somebody just said that is the correct answer. but best way to go starboard sir. एक मिनट अभी मैं बेस्ट और सेकंड बेस्ट एंड थर्ड बेस्ट पे नहीं जा रहा हूं. अभी मैं खाली ये डिस्कस कर रहा हूं कि एक्शन क्या क्या ले सकता हूं मैं. पहले तो मुझे वो पता होना चाहिए ना. तो सम वन ऑफ यू जस्ट सेड इट कि as per rule number 18 it says I have a duty to keep clear. How to keep clear is not written. I can go to starboard, I can go to port. Is it okay? Okay sir. Can I reduce speed? Yes, I can. No issues. वो तो कभी भी मैं कर सकता हूँ. As per rule number 8 echo. 8 echo tells me that if at any time to assess more time for the situation, you can reduce speed
or even stop your engines. So 8 echo तो लागू होता ही है हमेशा. Section of speed is as per 8 echo always. So coming back to this question again, over here, I can go to starboard, I can go to port. Is that okay with everyone? सर 8 रूल नंबर 8 तो कोलिजन अवॉइड करने के लिए है ना. अभी तो कोलिजन हुआ ही नहीं है, रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट कर रहा है अभी तो. 18 अभी मैं बता रहा हूँ एज पर रूल नंबर 18 अल्फा आई कैन ऑल्टर कोर्स. ऑफ कोर्स पॉइंट नंबर 1 2 3 स्टैंडर्ड जो पहले जो हमने लिखे थे वो तो है ही है. ऑल्टर कोर्स टू स्टारबर्ड, दैट मीन्स वन शॉट ब्लास्ट, और alter course to port, that is two shot blast. Both are applicable since I have duty to keep clear. And now I change the same case. This can be a ram, or this could be a NUC, or this could be a fishing vessel, or this could have been a sailing vessel also. My action will remain the same. Is this okay with everyone? Yes, sir. Is case number 7 okay with everyone? सर एक क्वेरी था. सर रूल हम जैसे ऑल्टर कोर्स टू स्टारबोर्ड है तो जैसे रूल नंबर 8 चार्ली के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लोज वाटर सिचुएशन से अवॉइड करना है तो उसे क्लोज वाटर 8 चार्ली 8 चार्ली कहाँ से लेके आ गए आप इसमें? What are you trying to bring? 8 चार्ली क्या लेके आ रहे हो आप इसको? क्या बोलना चाहते हो? मैं समझ नहीं पाया. हाँ जी बताओ 8 चार्ली में क्या लिखा है? सर if there is sufficient sea room, alteration of course alone may be the most effective action. सर उसमें लास्ट में लिखा है does not result in another close water situation. So if we are altering our course to starboard, so it may lead to another close water situation because it's as a tug and tow. How? This guy is going like this. I am going like this. So I am going to go like this, na? So how is it going to have a close quarter situation with this guy? ये मुझे नहीं समझ आया तुमने क्या बोल रहे हो. अगर मैं इससे दूर जा रहा हूं तो इससे मेरी क्लोज क्वार्टर सिचुएशन कैसे आ रही है? मैं तो इससे स्टारबोर्ड जा रहा हूं ना. यस सर. और फिर कीप क्लियर करने के लिए वापस घूम के आ जाएंगे ना. तो मैं स्टारबोर्ड साइड से जाके इसके आगे से पास करके चला जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा. बात खत्म हो जाती है. तो इसकी इसमें क्लोज क्वार्टर सिचुएशन कहाँ आ रही है? सर अगर बी की स्पीड ज्यादा हुई तो सीपीए घट जाएगा ना फिर से. अगर स्टारबोर्ड भी अल्टर करोगे तो स्पीड पे तो डिपेंड करता है सर. रूल में कहीं स्पीड के बारे में कोई मेंशन है? नो सर. कहीं पे भी. None of your rules are dependent on speed. So why are you bringing something which is not written in the rules? आप उसको लेके आओगे तो आप गोते खाओगे. अगर सर एग्जामिनर बोल दे बी की स्पीड थोड़ी ज्यादा है 10 नॉट्स है, ए की 6 नॉट्स है, तो फिर क्या बोलेंगे? अगर बी की स्पीड 10 नॉट्स है और ए की स्पीड 6 नॉट्स है तो रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. अगर वो इतनी दूर हो कि हाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सीपी 0 आ रहा है वहां पे, ऐसा भी तो हो सकता है सर. हो सकता है. इस सिचुएशन में आपका सीपीएस 0 हो सकता है क्या विद 10 and 6? इज इट पॉसिबल? अगर बी सर ज्यादा दूर होगा तो हो सकता है सर. मे बी पॉसिबल सर. पॉसिबल तो है सर ये. उस केस में आप पोर्ट लेंगे सर. देखो ऐसा है कि you are talking here about a 90-degree angle of cut. 90-degree angle of cut में तो पॉसिबल नहीं है.
हाँ दे दे एग्जामिनर की हाँ CP 0 हो जाएगा, वो बी थोड़ा ज्यादा दूर है, ए थोड़ा कम दूर है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से, और बी की स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे कोलिजन तो हो ही जाएगा सर। मल्टी स्टार्बोर्ड नहीं कर सकते ना। तो फिर पोर्ट चले जाओगे, अपने दोनों ऑप्शन है, आपने अपना ट्रायल मैनूवर चेक करना है, विच वन गिव्स यू अ बेटर फास्टर avoidance of the risk of collision, you'll take that action as per your trial maneuver. Where is the problem in that? ओके सर। Bhai, there is something known as trial maneuver. I hope you all are aware of that. Yes or no? Yes, sir. Sir, can we mention trial maneuver while like Yes. he's asking us? Uh, Because then it will again come like trial maneuver is not in R or something like that. no, 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 no. Trial maneuver is a part of a control of your ARPA. This is Got it. available to you. Yes or no? Trial maneuver is a part of your ARPA. And it is there with you always. हमेशा होता है आपके पास. Yes or no? यस सर। तो फिर therefore कोई issue नहीं है. Sir, would this come according to risk of collision, Bravo, risk proper use shall be made of radar equipment if fitted, something like that? बट हमको इसमें यहाँ पे हम कहाँ, हम डेविएट क्यों कर रहे हैं, हम दिस थिंग इज प्लीज स्टिक टू आरओआर, लेट्स स्टिक टू आरओआर, लेट्स नॉट डेविएट ऑफ, because we're Correct. deviating off, we're just going haywire right now. It's a very simple case, इसमें कोई complication नहीं है. I'm just trying to correlate this case number 7 with case number 3 that I had done with you. I want you to find out the difference between case number 3 and case number 7. That is what I am trying to bring about. उसमें towing vessel था with towing vessel lights, with white lights, no ram. Yes, sir. उसमें मेरा action था maintain course and speed. Yes or no? Yes, sir. Now I have a case with it is showing ram lights. So therefore I can alter to both the sides. I can alter to this, I can alter to this. दोनों is possible. Is that okay? Yes, sir. Okay. This rule, this case is not over as yet. I'll be coming back to this case. I'm going to case number 8 and then I'll come back to 7 again. All right. Case number 8. Case number 8. This is my vessel, powdered vessel. This is a vessel which is anchored over here. And this is a vessel. This is where I have to go and drop my anchor. So I've got two options. I have this option. I have this option, calling it as option number 1. I have this option, calling it as option number 2. I have to go and drop anchor at this anchorage position. Both the That options Bravo exist. vessel also, sir, power driven vessel. Beg your pardon? Bravo vessel is already anchored. Okay, sir, anchored. She is anchored. So she has dropped her anchor already. Okay, sir. I want to go and drop my anchor in the anchorage. These two routes exist for me. Which route will you prefer and why? Depend on route will you current prefer? also, no? So we can
like to say 1 and 2 also, but depend on the current, क्योंकि एंकर की वजह से वो जो शिप है वो हाँ। मूव भी करेगा इधर से उधर। ओके। तो हम अगर सपोज आपका जो करंट है वो शिप को स्टारबोर्ड साइड वो कर रहा है, पुश कर रहा है, तो हम पोर्ट साइड जाएंगे। So let's say the current and the wind is from a right ahead. भाई जो जो तुम बोलते जाओगे ना उस सब का मेरे पास जवाब है। ओके तो सर। तो काला पानी तो जाना ही है, सिंपल नहीं जाना लॉजिक। सर। तो Sir, इसलिए Bravo is moving, right? ब्रावो इज नॉट मूविंग भाई, उसका इतना बड़ा लंगर मैंने डाल दिया है और वो तुम कहते हो कि मूविंग, ये लंगर है। Sir, which anchor is used? तो ये इसमें भी ये राइट सामने से जा रहा है, आगे से। पीछे और से तो क्या? नहीं पता मेरा कौन सा एंकर डला हुआ है। पीछे Sir, से आप which देख, anchor is in use for Bravo? तो आप देख पाते हो पीछे से जब जहाज के पिछवाड़े से आ रहे हो सब वन यूज करेंगे, सब वन। तो आपको आगे नजर आ रहा है क्या कि उसका कौन सा एंकर है? सर स्टारबोर्ड जाएंगे। स्टारबोर्ड जाओगे क्या? क्यों स्टारबोर्ड जाओगे? रीजन? ये रीजन नहीं पता सर, बट स्टारबोर्ड ही लेंगे। रीजन नहीं पता। एनीबडी फॉर पोर्ट? No sir, we will go to starboard side. कैन यू गो टू पोर्ट? Yes sir, we can go port sir. Sir, we can go to either side, sir. Yes sir. ओके, ये तो बात तो क्लियर हो गई। ओके, सो वी कैन गो टू साइड, ये तो बात क्लियर है। कैन गो टू स्टारबोर्ड और पोर्ट, ठीक है? सो दैट्स योर फर्स्ट preference will be starboard first. Preference will be starboard first. Why? तो क्योंकि स्टारबोर्ड साइड इज ऑलवेज अ सेफ साइड, इसलिए कैप्टन का भी जो कैबिन होता है वो स्टारबोर्ड साइड में ही होता है, ऐसा मैंने सुना था मतलब। चलो अभी केविन पे मत जाओ, Kevin पे मत जाओ। starts moving, sir. Don't get to go into his cabin right now, because I would like to keep my starboard side clear at all times. I'd like to keep my starboard side clear at all times. I'd like to keep my starboard side clear at all times. Why? So that जब मैं starboard जाऊंगा इधर से ऐसे and इधर से जाऊंगा, अगर कोई और जहाज आ रहा है इधर में जिसके लिए मैं गिव वे बन गया हूं, तो मैं फिर और starboard जा सकता हूं। That is the reason why the master always likes to go to the starboard side. So I'd like to keep my starboard side clear at all times. This is called as prudent seamanship. It is also called as observance of good seamanship. Good practice of seamanship. और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? As per rule number 2. Yes sir. कहाँ लिखा हुआ है? Rule number 2 alpha. As per rule number 2. Right? अब rule number 2 खोलते हो जब, rule number 2 जब खोलते हो तो उसमें ये कहता है, read rule number 2 अल्फा को पढ़ो।
पढ़ो। Nothing in these rules shall exonerate any vessel or the owner, master, or crew thereof from the consequence of any neglect to comply with these rules or of the neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of seamen or by the special circumstances of the case. बस सिंपल लॉजिक है कि by the ordinary practice of seamen. This ordinary practice of seamen is nothing but prudent seamanship or observance of good seamanship. This is known as ordinary practice of seamen. लाइक सर जैसे आपने पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसके स्टारबोर्ड में, अगर हमारा वेसल वहां पे होता और ये इस तरीके से खड़ा होता सर तो हम फिर इसके astern से होके जाते. दैट इज द ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमैन. करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली राइट. तो अगर ये कोई जहाज यहाँ पे अगर ये कहीं किसी एक साइड पे खड़ा होता तो फिर हम इस जहाज के स्टर्न से जाते, बाउ से नहीं जाते, क्योंकि लास्ट मिनट पे वो जहाज कभी भी स्विंग कर सकता है और आ सकता है मेरी तरफ. तो वी ऑलवेज ट्राई टू गो टुवर्ड्स द स्टर्न ऑफ द वेसल. वो जहाज भी आ सकता है और सर उसकी चेन भी अटक सकती है हमारे और उसकी प्रोपेलर चेन भी अटक सकती है. इसलिए so it's always a prudent seamanship to pass by the stern of the other vessel, not to pass by the bow of the other vessel when she is anchored. Is that okay? Is case number 8 okay with everyone? I can go to port also, but उसके लिए मुझे larger alteration लेनी है. फिर मुझे इस तरीके से जाना है, इतनी ज्यादा larger alteration लेके जाना है ताकि अगर कोई और क्रॉसिंग वेसल आता है तो भी मेरे पास आई हैव टू कीप सफिशिएंट सी रूम बिटवीन माय स्टारबोर्ड साइड एंड ब्रावो. इन दोनों के बीच में मुझे इतना सी रूम रखना है ताकि मैं स्टारबोर्ड जा सकूं. बट वो मोर एक्टिव हो जाएगा ना सर. करेक्ट, बट आई कैन गो टू पोर्ट. ऐसा नहीं है मैं पोर्ट नहीं जा सकता. यस सर, वी कैन गो बोथ साइड बट वी द कैन गो सेफर बोथ साइड इज स्टारबोर्ड साइड. So अगर if the wind and the current was all from starboard side, I would have gone to port. I wouldn't have gone to starboard. Huh? Yes sir. Then I would have gone to port for sure. But wind and current कहीं भी मेंशन नहीं है ना सर. मैंने तो आपको आगे से दे दिया ना, तभी तो मैं जान के आगे से दिया. Yes sir. इसीलिए मैंने आगे से दे दिया था आपको. Okay sir. Now that means basically what I'm trying to do is I'm trying to keep the no-go area. This is a no-go area. This is a no-go area. Yes sir. I'm trying to keep the no-go area onto my port side. This can be a wreck. It can be a buoy. It can be anything. Now, Yes, it's a no-go area. So now I switch back to case number 7. I come back to case number 7. And I have a vessel. But she's a ram. She could be a NUC also. She could be a fishing also. And she could be a sailing also. I've got two options. Which option will you prefer and why? We will go to starboard sir. Correct. This is my first choice. This is my second choice. Is this okay with everyone? Yes sir. Yes, sir. Right? And as per what? As per rule number 2 alpha, prudent seamanship, ordinary practice of seamen. समझ में आया? Yes sir. अब इसमें एक एक्सेप्शन है केस नंबर 7 में. सपोजिंग आई गिव यू, ये एक्सेप्शन है.
This is a fishing vessel and she is making way. If She's a she is making, She is a fishing vessel and she is making way. Calling it as case number 9. Okay. Fishing vessel making way. Risk of collision exists. Can you go to starboard? Answer is yes. Can you go to port? The answer is yes. Which one will you prefer? Starboard, sir. Now you have to think. See, अब थोड़ा सा ये tricky question है. Port sir, port. अब थोड़ा tricky हो गया. ये मेरी first choice होगी. ये मेरी second choice. He is making way, sir. Correct. He Absolutely is right. not a power-driven vessel. He is making way. She is a fishing vessel. I'm supposed to keep clear as per 18 alpha. But now Yes. I will prefer to go to port first. Second choice to starboard. Why? Number one, by the time she goes here, I would have gone, my distance would have increased with her. Yes, sir. That's point number one. Point number two, fishing vessels, whenever they make way, they are going towards some place. Where are they going? They are going towards an area where the school of fishes lie. Yes, sir. They are chasing that. They're going to the school of fishes. So I have to avoid that. अगर मैं starboard चला जाऊंगा, I might be entering that area where जहां इसने घुसना है. Yes, sir. या उसके जहां नेट्स हैं. जो उसको पता है मुझे नहीं पता. तो एक्सीडेंटली मैं उसकी नेट्स के एरिया में ना घुस जाऊं. इसलिए I need to be smarter. So it is always preferred for fishing vessel making way. It is preferred to go to port. Is this okay for everyone? Yes, sir. yes, we can prefer, sir, but we can also do starboard. अरे बाबा वो तो मैं शुरू में पहले बोल ही दिया है. वो तो मैं उसमें कोई डाउट ही नहीं है. Yes, sir. मैं तो बात कर रहा हूँ कि जब एट सी आप मिलोगे फिशिंग वेसल को कैसे संभालोगे. ऐसे संभालोगे. Okay, sir. Got it. That sir. is my point. बट That सर is my- जो 7th केस था जिसमें मैं रैम के साथ डील कर रहा था, उसमें मेरी प्रेफरेंस क्या होगी सर? उसमें मेरी प्रेफरेंस स्टार्बोर्ड होगी. वाई सर? उसमें मेरी because it is always better to pass ahead of these guys in UC or RAM because they're doing some work. They can suddenly stop. They can suddenly do something. So that is how. So you have to be a little careful with them. Okay, sir. ओके सर. But if you have a RAM which is making way and going to the port to starboard, then you can go to port also. That is your first choice. I'm not stopping that. Okay, sir. ठीक है, is that okay? सर वन डाउट हाँ जी. सर, अगर केस नंबर 7 में वेसल अल्फा टीएसएस में होता है तो उसका एक्शन क्या होता है? अभी TSS में अभी वहाँ पे रुक जाओ. होल्ड ओके इट. सर. अभी 9 and 10 पे आएंगे ना तब वो करेंगे. अभी तो पहले ओपन सी संभाल लें. अभी तो ओपन सी Okay. संभाल. अभी तो पहले ओपन सी संभाल लें ना पहले. तो अभी फिर बाद में हम जब घुसेंगे साउथ चाइना सी के अंदर घुसेंगे, डोंट वरी. 10,000 वेसल्स के साथ चलेंगे. तो तब की तब देखेंगे. पहले एक एक करके संभाल लेंगे ना. ठीक है. Okay. चलो. ऑलराइट. सी यू देन.